Good afternoon, friends. So let's take another type of question today, which is the assumption based question. Okay, so जैसा आपने देखा है ये critical reasoning और RC ये दोनों जगह काफी frequently asked question होता है assumption based question, and sometimes it poses a little bit of a challenge to the student because assumption जो है, देखिए assumption क्या होता है? Assumption वो होता है जो हमारे दिमाग में होता है कि उसको हम explicitly state नहीं करते. So let's say we want to arrive at some conclusion, and but then we are using some basis for that or some reason for that, which is in our minds. We have not stated it. Okay, so उसको हम कहते हैं assumption. So it's like trying to get into somebody's mind and figure out कि उसने ये conclusion पे arrive होने के लिए क्या assumption रखा है. Okay, so that's why it becomes a little challenging. However, कुछ टेक्निक हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, आई टेल यू वन टेक्निक. उससे हम जो गिवन ऑप्शंस होंगे चार या पांच, उसमें से करेक्ट assumption पे अराइव काफी एक्यूरेटली हो सकते हैं. Okay, so let's take a look at an argument, a very simple, a very basic argument to understand the assumption होता क्या है. So let's look at this argument. Now, argument, as you're aware, in critical reasoning language, is a set of statements that has a point, okay, where the author wants to convey some point or make a claim or a conclusion. Okay, so उसमें वो set of statements use करता है. तो वो set of statements जो होते हैं उसमें premises भी होते हैं और उसमें conclusion भी होता है. Premise मतलब basically the रीजनिंग बिहाइंड इट, किस बेसिस पे आप कंक्लूजन पे अराइव कर रहे हो. ओके, तो किसी भी आर्गुमेंट के जब हम उसको पढ़ते हैं तो वी शुड बी एबल टू फिगर आउट कि उसके प्रेमिसेस क्या है, किस बेसिस पे उसने कंक्लूजन पे अराइव किया है और कंक्लूजन है क्या. So let's read this argument. All kids are excited when they get new toys. Therefore, Tim will be thrilled when he gets the new radio controlled car we bought. Now, here, this statement is obviously the conclusion, and this is the premise. Conclusion is, see, generally, conclusion जो स्टेटमेंट होता है उसके पहले एक कंक्लूजन इंडिकेटर होता है. जनरली हर टाइम नहीं होता. देयरफॉर, हेंस, दस, सो. अगेन दिस इज, देयर कुड बी एन एक्सेप्शन. वर्बल में कोई भी चीज 100% नहीं होती है इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. इट्स नॉट लाइक क्वांट्स वेयर इन 2 + 2 विल ऑलवेज गिव यू 4. सो ये लैंग्वेज है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बन सकता है. But sometimes, or rather, more or less, you will find some conclusion indicator, therefore, hence, yeah, thus. So this therefore tells you that this is the conclusion, and this is the premise. So क्या ये premise इसके basis पे हम इस conclusion पे arrive हो सकते हैं? All kids are excited when they get new toys. Therefore, Tim will be thrilled when he gets this. But Tim कौन है ये? Okay, how do we know Tim will be thrilled? Because Tim has not been mentioned in the premise. So there is an obvious gap. So अगर conclusion में कोई element appear हो रहा है जो कि premise में नहीं था, so then the assumption has to basically link that, okay, with the previous statement. Okay, therefore जो element नया आया है conclusion में, उस element को address करना चाहिए उस assumption को. तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ पे क्या assumption होगा. हमारा assumption यहाँ पे होगा that Tim is a kid. Okay, this is the assumption. That's why he is thrilled, because all kids are excited when they get new toys. Tim is a kid, therefore Tim will be thrilled. ये assumption होना जरूरी है यहाँ पे, right? So this assumption, when you plug in here, this makes this conclusion valid. So an assumption can be said to be an unstated premise. Okay, तो जैसे हमने देखा कि ये एक premise है, तो this premise is stated. Okay, ये दिया हुआ है आपको. Whereas assumption is an unstated premise. So जब हम एक stated premise, एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और उसमें assumption को add करेंगे, then we will be able to arrive at the conclusion in a logical manner. Okay, otherwise conclusion may not be valid. Okay, so assumption is an unstated premise, and uh, let's look at it here now after we plug this in. So all kids are excited when they get new toys. Tim is a child, therefore Tim will be thrilled. So now this argument is pretty reasonable. Okay, so we can conclude from this that adding the correct assumption to the argument will make the argument valid. Now I had mentioned in the beginning that there is a technique by which you can ascertain कि जो आप assumption option choose कर रहे हो वो correct है कि नहीं. That technique is called assumption negation technique. So ये एक बहुत powerful technique है और इसको हमें practice करना चाहिए. So ये क्या कहती है? This says that adding the negated assumption to the argument will make the argument invalid.
मतलब आपने एक अजम्पशन लिया, ओके, सपोज देयर आर 5 ऑप्शंस गिवन, ओके, ए बी सी डी ई, you choose C, okay, you think that C is the correct answer, so you negate it, and when you negate it, then your conclusion should fall apart, okay, it should not remain valid, then that means that this is the correct assumption. तो अगर आप दो या तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, सपोज आपको लग रहा है सी और ई हो सकता है, तो आप दोनों को निगेट करके देखो, जिसके निगेशन से कंक्लूजन इनवैलिड हो जाता है वो करेक्ट होता है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल इटसेल्फ, ऑल किड्स आर एक्साइटेड व्हेन दे गेट न्यू टॉयज, इसको निगेट कर दिया हमने, टिम इज अ चाइल्ड को निगेट कर दिया, टिम इज नॉट अ चाइल्ड, नाउ इज दिस कंक्लूजन वैलिड? ऑफ कोर्स नॉट। All kids are excited when they get new toys. Tim is not a kid. Therefore, Tim will be thrilled. This becomes invalid, right? तो हमने अगर एक assumption लिया और उस assumption को negate कर दिया तो हमारा conclusion invalid हो गया. So that is the test that you have arrived at the right assumption. So it's a simple test. Let's try to use it in an example. Let's try to do a question. Assumption में आपको एक और चीज देखनी कि assumption में you can also pre-think. जैसा हमने वीकनिंग के क्वेश्चन में देखा है कि जब वीकनिंग का क्वेश्चन आता है तो प्री थिंक करने से कई बार वी रीच द करेक्ट आंसर मोर क्विकली और विदाउट गेटिंग कंफ्यूज। प्री थिंक करना मतलब ये है कि आप आर्ग्यूमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन स्टेम को पढ़ो, डोंट लुक एट द ऑप्शंस, जस्ट थिंक इन योर माइंड कि क्या अजम्पशन हो सकता है, ओके, पुट योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो एंड ट्राई टू थिंक कि क्या अजम्पशन हो सकता है इस कंक्लूजन पे अराइव होने के लिए, एंड यू मे फाइंड दैट दैट अजम्पशन इज गिवन, ओके। तो अजम्पशन और वीकनिंग, ये दो टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये प्री थिंक करने से कई बार हम आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं बिना भटके हुए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि कई बार ऑप्शंस इस तरीके से बने होते हैं कि वो आपको एक ट्रैप सेट करते हैं एंड यू माइट गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द राइट वन, ओके। तो ये प्री थिंक भी हो सकते हैं। So let's take a look at this argument. Because no employee wants to be associated with bad news in the eyes of superior, information about serious problems at lower levels is progressively softened and distorted as it goes up each step in the management hierarchy. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि वो किसी भी बैड न्यूज का मैसेंजर बने। देयरफोर जो भी अगर प्रॉब्लम्स होती नीचे नीचे सपोज करो गड़बड़ हो रही है, तो उसको ऊपर वाला, वो नीचे वाला जो है ऊपर रिपोर्ट करते करते सॉफ्टन कर देता है कि मतलब अगर प्रॉब्लम 10 है तो उसको वो 7 बताएगा, फिर अगले स्टेप पे वो 5 बताई जाएंगी, फिर अगले स्टेप पे वो 3 बताई जाएगी, ओके। सो यू अंडरस्टैंड दैट एज द इंफॉर्मेशन गोज अप, ओके, अप मीन्स हायरार्की में सीनियर लेवल के पास जब जा रही है तो इंफॉर्मेशन की जो सिवियरिटी है वो कम होती जा रही है और डिस्टॉर्ट भी होती जा रही है, ओके, एज इट गोज अप ईच स्टेप इन मैनेजमेंट हायरार्की, ओके। दैट मीन्स अगर एक जूनियर आदमी है तो 10 बताया उसने, उसके ऊपर वाले मैनेजर ने 7 बताया अपने ऊपर वाले को, उसके ऊपर वाले ने 5 बताया और उसके ऊपर वाले ने 3, और जो सीईओ को पहुंचते पहुंचते तक पता पड़ा कि वो उतनी सीरियसनेस है रही नहीं गई, तो सीईओ को लगा यार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो। तो इट गिव्स अ रॉन्ग एंड डिस्टॉर्टेड मैसेज टू मैनेजर, बिकॉज टू द सीईओ, बिकॉज क्या हो रहा है कि हर स्टेज पे ये नीचे वाला जो है ये ये नहीं चाहता कि ये बैड न्यूज का मैसेंजर बने, ओके। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज देयर फॉर, ये कंक्लूजन है, लेस वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रॉब्लम्स एट लोअर लेवल्स देन आर हिज और हर सबऑर्डिनेट्स एट लोअर लेवल। दैट मीन्स अगर ये सीईओ यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके नीचे एक डायरेक्टर है सपोज, ओके, उसके नीचे एक जनरल मैनेजर है, उसके नीचे एक सीनियर मैनेजर है सपोज, और उसके नीचे एक मैनेजर है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दिस सीईओ इज मच लेस अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, okay, at lower levels than his or her subordinates. That means they are more aware, because इस तक पहुंचते पहुंचते वो इंफॉर्मेशन जो है वो डाइल्यूट, ये कंक्लूजन है। तो क्या ये कंक्लूजन खाली इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, या अगर हम कह रहे हैं ऐसा तो हमारे दिमाग में क्या assumption? डोंट रीड द ऑप्शंस, ओके, जस्ट थिंक। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे वाला कोई भी बुरी से बुरी खबर है ऊपर देते टाइम उसको सॉफ्टन कर देता है, तो जब तक वो ऊपर पहुंचती है सीईओ के पास में वो खबर बिल्कुल ही डाइल्यूट हो चुकी होती है, डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है। देयरफॉर CEO is much less well informed about the problems at lower level than are his subordinates. तो ये कंक्लूजन पे अराइव करते टाइम अगर हम प्री थिंक करें तो हम सोच सकते हैं कि यार ये सीईओ जो है ये क्या इसी पे डिपेंड करता है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन फ्लो ऐसे ही आए, क्या उसके और कोई सोर्सेज नहीं है इधर
कि इधर क्या उसको कोई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं और से नहीं आ सकती है। दैट मीन्स ये कंक्लूजन पे अराइव होते टाइम ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको जो उसका जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से आ रहा है। तो प्री थिंक करने से हमें एक अप्रोच मिली, हो सकता है आपको ऐसा एक ऑप्शन ना मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी जाए। तो लेट्स नाउ रीड द ऑप्शंस आउट एंड सी वेदर इट रियली इज वन सच ऑप्शन इज देयर और नॉट। दूसरा हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, वो करेक्ट ऑप्शन चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, यू कैनॉट हैव एन ऑप्शन दैट डजंट टॉक अबाउट चीफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज कंक्लूजन में चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है और प्रेमिस के अंदर कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो आपको अगर assumption निकालना है तो assumption has to link the chief executive with the rest of the statements. Okay, so let's look at various options. Problems should be solved at levels in management hierarchy at which they occur. कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि सीईओ इज लेस वेल इन्फॉर्म, प्लस इसमें सीईओ का भी कोई मेंशन नहीं है। तो ये ऑप्शन टोटली इररिलेवेंट है, इसको हटाए। Employees should be rewarded for accurately reporting problems to their superiors. Now, whether employees should be rewarded or whatever should be done to them, is this relevant to this particular conclusion? हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव इज देयर फॉर लेस वेल इन्फॉर्म। नाउ वेदर यू start rewarding employees for accurately reporting or you don't, that's a different issue altogether. आज के सिनेरियो की बात होगी, आज के सिनेरियो में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ऊपर आती है वो डिस्टॉर्ट होती जाती है, इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव लेस वेल इन्फॉर्म है, तो ये उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा। Problem solving ability is more important at higher levels than it is at lower levels. Now, we are not talking about problem solving ability. We are talking about the information about the problem itself. कि प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती ऊपर तक, फॉरगेट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो ये भी इनकरेक्ट है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स एट लोअर लेवल्स फ्रॉम नो सोर्स अदर देन देयर सबऑर्डिनेट्स। ओके, अब ये assumption देखो, हम जो अभी प्री थिंक कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि ये फॉर दिस कंक्लूजन टू बी वैलिड the CEO must receive all information from these sources only. He has no other source. So ये assumption true होना चाहिए, okay, for this conclusion to be valid. So which we found in D. So D को हम shortlist कर लेते हैं. Let's look at E. Some employees are more concerned about truth than about the way they are perceived by their superiors. Some employees may be more concerned about the truth, but we are not looking at that situation. We are looking at the situation which is given here. कि ऊपर तक क्या जाता है, okay, तो ऊपर तक जा नहीं रहा है. So therefore this is also irrelevant. So our correct answer is D. Now, this was a little, I would say, easier arriving at this since we had pre-thought the answer. Now, let's look at the assumption negation test. Let's see whether this particular option passes that test or not. So let's negate this. Sentence says, chief executives obtain information about problems at lower levels from no source other than subordinates. इसको negate करते हैं कि chief executives obtain information about problems at lower levels from other sources also. From other sources also. That means chief executive के बाद में और भी source है information. Now, is this conclusion valid? Therefore, chief executive is less well informed. Okay, he may not have got the correct picture from here, but he has other sources. So they would have told him the exact situation the way it is. So this conclusion then becomes invalid, and therefore our assumption negation test passes with flying colors. Okay, I hope this thing is clear. I'll repeat. इस स्टेटमेंट को हम निगेट करते हैं, इस assumption को, chief executives obtain information about problems at lower levels from other sources also than their subordinates. If this is true, okay, negation is true, then your conclusion cannot be valid, because if he obtains information from other sources, then we cannot say that he is less well informed. Okay, he would definitely know about the situations. So therefore, D is the correct answer. I hope you understand. Let's try one more question. A famous singer recently won a lawsuit against an advertising firm for using another singer in a commercial to evoke the famous singer's well-known rendition of a certain song. अब यहाँ हो क्या रहा है देखो, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ओके, एक एड एजेंसी है ना, उसने एक सिंगर लिया कोई भी, ओके, लेट्स से वी टुक सम सिंगर एक्स, और उससे एक फेमस सिंगर है, तो लेट्स से कोई अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग है, ओके, मे बी, तो लेट्स से अरिजीत सिंह का कोई फेमस सॉन्ग है, और उसने ये जो एक्स है, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एक्स अपने कमर्शियल में इस एक्स से इस अरिजीत सिंह का कोई गाना गवा दिया उस एजेंसी, ठीक है, वो एड में
तो जिंगल गाया उसने, और वो जिंगल जो था वो अरिजीत सिंह का एक फेमस सॉन्ग। तो अरिजीत सिंह ने उसके उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर लॉ सूट कर दिया। ओके, वो कोर्ट में ले गया उसको, बोला आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने किसी और सिंगर से मेरा गाना कैसे अपने कमर्शियल में गवा दिया। ओके, तो अब क्या हुआ कि अरिजीत सिंह जीत गया वो, अरिजीत सिंह वन द केस। एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ सूट, एडवर्टाइजिंग फर्म्स विल स्टॉप यूजिंग इमिटेटर्स इन कमर्शियल्स। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये एक्स वाई जेड जो ये यूज कर रहे थे, जिससे कि ये फेमस सिंगर्स के गाने गवा रहे थे अपने कमर्शियल्स में, वो बंद कर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला इसने अब, देयरफॉर, तो दिस इज द कंक्लूजन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल राइज सिंस फेमस सिंगर सर्विसेज कॉस्ट मोर देन दोज ऑफ देयर इमिटेटर्स। तो अब ये कह रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है इनकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इनको ये इमिटेटर्स नहीं चलेंगे, इनको तो ओरिजिनल सिंगर को, अरिजीत सिंह को हायर करना पड़ेगा, तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब आपका क्या अजम्पशन है, कैन वी कम टू दिस कंक्लूजन बेस्ड अपॉन जस्ट दीज? आई डोंट थिंक सो, देयर हैज टू बी एन अजम्पशन। वो अजम्पशन क्या है? लेट्स प्री थिंक, लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर the ad agency was using a song of Arijit Singh, which was sung by somebody else, X, and the commercial was very famous. But Arijit Singh ने उसको कोर्ट तक ले गया और उसको लॉ सूट जीत गया, and therefore this ad agency will not be able to use X. Therefore the conclusion says कि ad agency को अब अरिजीत सिंह को रखना पड़ेगा अपने गाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या अजम्पशन, इसमें अजम्पशन ये है कि वो अभी भी उस गाने को यूज करेगा। कैन वी नॉट से, हो सकता है कि एड एजेंसी जो है वो उस अरिजीत सिंह के गाने को ही ना यूज करे, वो क्या यार अब हम किसी और तरीके से कर लेंगे, व्हाई डू वी नीड फेमस सॉन्ग, ओके, we will do our commercials in a different way. It is not necessary that every commercial has to have a song, famous song. Maybe they'll figure out some other way. लेकिन ये हम अगर हम हमारा कंक्लूजन अगर है कि therefore advertising cost will rise, therefore this assumption has to be there that the ad agency will continue to use these famous songs in their commercials. That assumption has to be there. Okay, तो हमें वो assumption ढूंढना है. Okay, so pre-think से हमें एक assumption मिला, and let's figure out where that assumption is, or if at all it is there. He says most people are unable to distinguish a famous singer rendition of a song from a good imitator's rendition of the same song. Most people are unable to distinguish कि अरिजीत सिंह गा रहा है या उसका वो जो एक्स है वो गा रहा है. They are unable to distinguish. Now, is it relevant to this? क्या उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इसलिए राइज हो जाएगी? मोस्ट पीपल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश. देखो ये तो पहले के सिनेरियो में था ना, कि वो अरिजीत सिंह का गाना एक्स से गवाते थे. नाउ वेदर दे वर डूइंग इट, वेदर पीपल वर एबल टू डिस्टिंग्विश, वेदर दे वर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, ये हमें कहीं वहां बताया नहीं. ओके, हो सकता है कि एड एजेंसी ने, एड एजेंसी का ये पर्पज नहीं हो कि वो अरिजीत सिंह की आवाज में गा देगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो वेदर पीपल आर एबल टू डिस्टिंग्विश और नॉट, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर कि उसी कारण ऐड बिकते थे उसके या उसी कारण प्रोडक्ट बिकता था, ऐसा तो नहीं बोल रहा. सो देयरफॉर दिस बिकम्स irrelevant and we can remove it. हमें अगर इसमें डाउट है तो हम इसको निगेट करके देखते हैं. Most people are able to distinguish a famous singer's rendition of a song from good imitator's rendition of the same song. तो लोग तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. तो क्या इससे हमारी ये कंक्लूजन पे फर्क पड़ रहा है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल राइज और नॉट राइज? रादर ये तो री इन्फोर्स कर रहा है इसको निगेट होके. Okay, therefore this is not the correct. Commercial using famous singers are usually more effective than commercial using imitators of famous singers. Okay, so commercials using famous singers are usually more effective than commercials using imitators of famous singers. देखो, अगर कमर्शियल्स यूजिंग फेमस सिंगर्स ज्यादा इफेक्टिव होते तो वो क्यों पहले वो यूज कर रहा होता इमिटेटर्स ऑफ फेमस सिंगर? सो ये तो उस लॉजिक को डिफीट कर रहा है, राइट? कि कमर्शियल, अगर कमर्शियल सिंगर्स यूजिंग यूजिंग फेमस सिंगर्स आर मोर इफेक्टिव, देन इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ दे शुड नॉट हैव यूज्ड दिस एक्स, they should have gone to Arijit Singh, right? So therefore this is not relevant, we can throw this out. The original versions of some well-known songs are unavailable for use in commercials. So original versions of some well-known songs are unavailable for use in commercial. तो इसके कारण इनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी? Is it that they were using only those songs? इसका क्या इम्पैक्ट है इसमें? इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है. ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ सम वेल नोन सॉन्ग्स आर अनअवेलेबल फॉर यूज इन कमर्शियल. सो दिस इज बेसिकली, लेट्स नेगेट दिस. इसका नेगेशन होगा, दी ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ सम वेल नोन सॉन्ग्स आर अवेलेबल फॉर यूज इन कमर्शियल. ठीक है, तो सम वेल नोन सॉन्ग्स आर अवेलेबल है. अवेलेबल है इसका मतलब ये थोड़ी है कि
ये उसको यूज करेंगे, हो सकता है वो सॉन्ग्स ना यूज करें, therefore it may not, so therefore this is not the correct answer. Advertising firms will continue to use imitators to mimic the physical mannerisms of famous. ये तो अलाउड ही नहीं है ना, ओके, ये तो कंटिन्यू टू यूज, ये तो लॉ सूट हो गया उसके ऊपर, so they cannot continue to use this, so this is not the assumption. The advertising industry will use well-known renditions of songs in commercials. Okay, now this जो हम प्री थिंक करके सोच रहे थे कि अगर उसको कॉस्ट बढ़ी, दैट मीन्स कि वो अभी भी फेमस सॉन्ग्स को यूज कर रहा है, ये assumption होना जरूरी है इसमें, otherwise this conclusion is not valid. So let's try to negate this. Advertising industry will not use well-known rendition of songs, so therefore advertising cost will rise. No. तो अगर हमने इसको निगेट किया तो हमारा कंक्लूजन इनवैलिड, and therefore that makes this correct answer. Okay, so I hope by way of these two examples you got the understanding of assumption questions to a fair extent. Okay, if you want to know more, you can reach out to me. You have my number. You can reach out to me on 98991 You can text or you can call. Okay, thank you so much and have a good day ahead.